Hi, good evening. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. It's always good to see in the evening also, no? When we are a little more presentable. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Very, Good very evening. good evening. Very good evening. I hope everybody's Sunday was working. Mine, mine was Yeah. working, but a fun day, ma'am. Acha, okay. All right. So welcome to everyone on the YouTube also. We'll be airing this on YouTube in a bit, and people who could not attend can actually re-listen to the question and answers in case you resonate with it. मतलब इसमें सारे अलग अलग जो क्वेश्चंस आए हम उसके जवाब देंगे। अगर चैट विंडो में भी अभी आते हैं तो उसका भी हम जवाब दे देंगे। अगर कोई मिस कर देता है तो इस सेशन को हम डाल भी देंगे, मतलब यूट्यूब पे तो ये चला ही जाएगा अभी, और आप दोबारा से सुन सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन का आपको क्लियर कट आंसर चाहिए तो। सो yes, so today we are supported by Soumya and Meena and Poonam. So yes. Yes, ma'am. Thank you for this opportunity. And ma'am, again, we have received some new questions. So altogether, maybe 15 to 20 questions we have gathered. Some of them are a repeat. So for everybody, we'll be clubbing them and representing as one question, ma'am, not so as to not sound repetitive. The first question is about the practices itself, ma'am. The question is, when we tell others about these practices that we do, they either mock or find it lame. It's just breaking my morale. How to not get affected by these things? Okay, so whosoever it is, the practices have to come from your life. You know, when people see the difference in your life, then they start practicing it. I mean, that's very, very clear. So if you are not exhibiting any kind of a change from within your life, if you are not getting better as a person, or if others are not finding any difference in you, then why would others want to practice? So please focus on yourself, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, because the most important person in this universe is you and everything stems from there. तो आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप लोग देखेंगे आपको बदलता हुए, और किस तरह से आप, जैसे आज सुबह के सेशन में देखा था कि अनु के हस्बैंड बोल रहे थे कि ये तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई है अभी जब से इसने सेशन शुरू करना शुरू किया है। तो ऐसे करके बेटी ने फिर ज्वाइन किया, फिर हस्बैंड ने भी उनका ज्वाइन किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा डिफरेंस आया था। तो इस तरह से जब आपकी जिंदगी में डिफरेंस आएगा तो आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग आके आपसे पूछेंगे दैट व्हाट इज इट दैट यू डू सो ब्यूटीफुल, व्हाट्स हैपेंड, एंड देन व्हेन यू टॉक देन दैट दिस इज सो। अगर मुझे किसी को बोलना है अगर कि ये मैजिक बुक या मैजिक प्रैक्टिसेस करने के लिए, तो मैं अपने सारे उनको बेनिफिट्स गिनवा दूंगी ना कि कैसे मेरी लाइफ में डिफरेंस आया है, और सब देख ही रहे हैं ना। मतलब मेरी विसिनिटी में मेरे घर वाले वो तो देख ही रहे हैं ना कि मेरे पास पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरी हेल्थ और रोबस्ट होती जा रही है, मेरे पास अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मेरे पास अमेजिंग ट्रैवल्स आ रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं ना ये सारी चीजें, तो मतलब मुझे किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर लाइफ में अगर अपने खुद के इतना ज्यादा डिफरेंस आया है तो अगला तो पूछेगा आगे बढ़ के कि मुझे भी ये करना है। सो इसका मतलब है आप प्रैक्टिसेस में भी थोड़ा सा और स्टेप अप कीजिए, टर्न अप द वॉल्यूम, जैसे पावर बुक में लिखा है, टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ योर प्रैक्टिसेस। इट्स नॉट मेकिंग अ बिग इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ। हाँ जी सौम्या। Okay, ma'am. The next question is, whenever I plan for an outing, due to packing stress and too much mind clutter, I end up with lot of quarrels with my family. So how do I be calm and pack? ओके, तो जब भी किसी को भी ट्रैवल पे जाना है, वेदर इट इज एन ऑफिशियल ट्रैवल और वेदर इट इज अ पर्सनल ट्रैवल, ओके, उसके पहले स्क्रिप्टिंग करना मैंडेटरी होता है, एज इफ ऑलरेडी हो चुका है। सपोज आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो, जैसे कैलकाटा ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, है ना, आप कैलकाटा में पर्सनल ट्रैवल के लिए जा रहे हो, तो उसके पहले से पूरी स्क्रिप्टिंग थरली फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड हो जानी चाहिए। दैट डियर यूनिवर्स, thank you for making the Kolkata trip so amazing and so vibrant,
थैंक यू सो मच दैट एवरी इंटरेक्शन जो मैंने वहां पे किया, मैं जिस इंसान से मिली, हर जगह लव एंड पॉजिटिविटी नजर आई. आई हैव नेवर हैड सो मच फन इन माय लाइफ. You know, the whole family gathered together and we had so much fun. We had the best food. We literally were dancing with joy. The hotel that we stayed in was like so amazing. It had such a beautiful view that every morning, you know, I would open the window and kind of look at the view. And whatever jahan jahan aapko jana hai, that our tour was so amazing. You know, we could cover so many places in one day, and yet we were so relaxed. The whole family was so harmonious and, you know, unified. So all that you have to already script before you go. So इस तरह से करना होता है. जब हमने अभी गोवा की ट्रिप किया था साथ में, तो हम तीनों ने स्क्रिप्टिंग की थी, और हम तीनों ने यूनानिमस गोल्स, हमारे मतलब कॉमन गोल्स थे, और हमने यही लिखा था. मतलब मैंने तो 555 प्रैक्टिस की थी, तो 555 में 5 दिन तक लगातार 55 टाइम्स लिखा था that thank you universe that my Goa trip from beginning to end was full of magics and miracles. Okay. And it just turned out to be like that. So वो आपका माइंडसेट के ऊपर है. कॉन्फ्लिक्ट्स अगर बाहर आपकी नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. तो अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स को प्लीज शांत कीजिए बाय स्क्रिप्टिंग, एंड अपनी ट्रिप को वैसे मैनिफेस्ट करने के लिए, एज इफ ऑलरेडी हो चुकी है, उसको लिख के कीजिए. मन में भी नहीं, लिख के करने वाली चीज है ये. आप पूरी स्क्रिप्ट लिखो, पूरी चिट्ठी लिखो यूनिवर्स को, कि एज इफ वो ऑलरेडी हो चुकी है, कि किस तरह शुरू से लेके एंड तक कितनी हार्मोनियस ट्रिप थी, पूरी फैमिली साथ में थी, बहुत मजे किए, मजे मजे में बिताया, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ योर लाइफ. आप फोटो बहुत अच्छी आई. हम तो ये भी लिखते हैं that all the photographs came out so good. We were literally looking like a diva. You know, the food and the places we went to was amazing. The vibe was so good. The beach clubs were like so rocking, and we had so much fun there. We were literally falling. हमने तो फ्लाइट का भी लिखा था कि फ्लाइट में हम बैठेंगे तो हम हंस हंस के गिर रहे हैं चेयर से, मतलब ये लिखा था. और वो लिटरली वैसा ही हुआ, एवरीथिंग. या सो प्लीज डू योर स्क्रिप्टिंग. फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पहचान जाता है कि आपने किस तरह की स्क्रिप्टिंग की है, तो वो उसी हिसाब से डिलीवर करता है. हाँ जी. Okay, ma'am. Next one is, I am new to this. It's been 2 to 3 weeks. I have been doing all the magical outcomes, but one of them comes true and rest 4 to 5 fails to action. Like her wishes come true के बारे में. You mean Magical magnificent outcomes, outcome. ma'am. हाँ, you mean magnificent outcome. हाँ हाँ, मैम, magnificent उसमें outcome से नहीं होती है. वन, हाँ मैम, यस करेक्ट. ओके. सो सो उसका डिप मैग्निफिस हो, इसकी वजह से डिप हो जाती हैं. हाँ अच्छा. ओके. तो ऐसा होता है कि जिस चीज में रेजिस्टेंस होता है ना आपका, वो चीज टाइम लेती है कभी कभी, है ना. यूनिवर्स कभी कभी कुछ चीजों को डिलीवर करने में बफर टाइम लेता है. जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती है उसमें यूनिवर्स बफर टाइम लेता है. ठीक है. या जिस चीज में आपका रेजिस्टेंस होता है कि क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, मुझे इतना चाहिए चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अगर वो वाला एटीट्यूड रहता है, दैट मीन्स लैक इन लिमिटेशन का या रेजिस्टेंट थॉट होता है. तो फिर ऐसे में यूनिवर्स टेक्स अ लिटिल बिट बफर टाइम. लेट इट बी, है ना. अगर आपने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाल दी है फाइनल आउटकम की, आप चिंता मत कीजिए. ठीक है. इट विल डेफिनेटली हैपन एंड इट विल एक्चुअलाइज. इफ नॉट टुडे देन डेफिनेटली इन 2 days. Sorry, one sec. सॉरी, मेरा तो थ्रोट अभी हील हो रहा है, थोड़ा कोल्ड एंड कॉफ ठीक हो रहा है. हाँ जी. मैजिक डस्ट ऑफ हीलिंग टू यू मैम. हाँ बोलो सौम्या, and listen and then I can reply. ओके मैम, ओके. How to overcome smoking and drinking addiction, and also addiction to any kind of like gambling market, stock market and all. In short, how to tackle addiction through practices. Okay, so this is for someone else or for themselves?
Like if I'm smoking, how do I stop my smoking, or my spouses or brothers or fathers smoking? No, for themselves, for themselves. For themselves. Okay. Yeah. So you just so you please continue doing your magic practices and keep telling to yourself that I'm so happy and grateful that I have very good habits. I hope the person has read Atomic Habits. It's a book which has just come around. I think एक साल पहले release हुई थी. Read that book, Atomic Habits. उससे एकदम से पता लग जाएगा. And then telling to yourself that thank you universe that I have very good habits and I'm physically, mentally and emotionally happy and healthy. Okay, that is it. तो physical, mental and emotional health में वो आ जाता है. फिजिकल में तो ऑफ कोर्स आ ही जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का इतना इफेक्ट अभी तक हो रहा था, वो तो ठीक हो ही जाएगा. बट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए जब आप प्रैक्टिस करते हो और बार बार अपने आप को बोल रहे हो दैट आई एम एंजॉइंग द बेस्ट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, उसमें सारे एडिक्शंस आ जाते हैं, चाहे वो टीवी देखने का हो, चाहे वो बिंज वॉच सीरीज देखने का हो या ऐसा कुछ. So yes, physical, mental, I am physically, mentally and emotionally happy and healthy and I have an amazing sense of self-control. This is what you have to keep auto-suggesting to yourself. अपने आप को बोलो, रात को सोते वक्त बोलो यही वाली चीज that thank you universe that I am physically, mentally and emotionally happy and healthy and I have an amazing sense of self-control. Okay, and there you go. You will see that within 6 days of your starting this in the morning and evening, आप ऐसे इंसान बन जाओगे. हाँ जी. Okay, ma'am. So the same question, another person asking for the someone else, how they can help the other person. The other person. So that Yeah. is called heterosuggestion. So the same thing that you're doing for yourself, now you are writing. इसमें जब आप किसी और के लिए कर रहे हो तो वो मॉर्निंग इवनिंग वाला नहीं चलेगा, फिर आप 21 टाइम्स 21 डेज के लिए करो. ठीक है, दैट सो एंड सो, सपोज उनका नाम है जो भी है, जैसे मनीष नाम है ना, तो आपको लिखना होगा दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट मनीष हैज वेरी गुड हैबिट्स एंड इज फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हैप्पी एंड हेल्दी एंड ही हैज एन अमेजिंग सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. That is what you need to write and you will see that 21 times 21 days के लिए लिखोगे, उनका अपने आप छूट जाएगा. We have one of the participants here, अभी वो नहीं है, मतलब इस वक्त नहीं है सेशन में, बट उनके वो बहुत परेशान थी अपने क्लोज रिलेटिव की अल्कोहलिज्म से, और मतलब पूरे घर में उनकी वजह से लाइक वो नहीं होता, मतलब बहुत डिसहार्मनी रहती थी. और तो उन्होंने किस तरह प्रैक्टिसेस कर करके, और ये वाली एफर्मेशन तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1 year 5 टाइम्स रोज उनके लिए ये वाली एफर्मेशन लिखी थी जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ 5 टाइम्स रोज लिखी थी 1 साल के लिए. और आज की तारीख में दैट पर्सन इज टोटली डी एडिक्टेड, बिल्कुल, बल्कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है. ठीक है, और फैमिली हार्मनी का वो, मतलब ही इज द रीजन फॉर द फैमिली हार्मनी. That person has become the reason for family harmony. He is the crux, the center of the harmony in his family. इतना फर्क आया है और मेरे आंखों के सामने हुआ है बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू दैट पर्सन. बिल्कुल जीरो अल्कोहल, जीरो हो गया है, मतलब पीना ही बंद कर दिया. कभी ऐसे कभी पार्टी हो गई अगर 2 महीने में एक बार, सम ओकेजन, तो एक ड्रिंक ले ली ऐसे, बट अदरवाइज द पर्सन इज टोटली डी एडिक्टेड. Yeah. Ma'am, Meena this side. So they can do Ho'oponopono also, prayer. They can do Ho'oponopono. So how to do Ho'oponopono is like, I'm sorry, please forgive me ke pehle that I take 100% responsibility of so and so person. जैसे किसी का भाई है suppose, तो उनके I take 100% responsibility of Manish, like जो भी उनका वो relation है, for him, and for whatever reasons this is there, I'm extremely apologetic towards it. For whatever is the reason why this is happening, I'm really sorry, please forgive me, and thank you for the best outcome and family harmony, and I love you. So उसके बाद ये बोल दिया ना, जब उसके बाद 108 times one needs to do I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. पहले पूरा एक्सप्लेन करना है कि आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी दैट फॉर व्हाटएवर रीजंस दिस सिचुएशन हैज कम इनटू माय लाइफ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थैंक यू एंड आई लव यू फॉर गिविंग द मोस्ट अमेजिंग आउटकम एंड परफेक्ट हेल्थ. और फिर उसके बाद 108 टाइम्स करना है एंड एवरी डे, एंड अगर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है देन ट्वाइस.
Yeah. Okay, हाँ जी, ma'am. so yeah. Yes. हो गया. What is your opinion towards the annual body checkups that are usually advised by the doctors after a certain age? Are they not sending a doubt signal to the cells and hence adding to our ailment and fear? Well, not really. I mean, there are some situations that have been there. मतलब कहीं पे भी मैजिक बुक में या पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अपना मेडिकल चेकअप ना कराओ. ये लिखा हुआ है कि जो बीमारी का आपका डायग्नोसिस हुआ है उसको आप पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, ग्रैटिट्यूड एंड लव प्रैक्टिसेस से कैसे ठीक कर सकते हो. ये लिखा हुआ है. अब वी डोंट नो, हो सकता है लास्ट टू लास्ट लाइफ टाइम की के कुछ सेडिमेंट्स रह गए हैं जिसके कारण द बीमारी इज हैपनिंग टू अस टुडे. दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. तो हो सकता है पिछले जन्म का कुछ हो जिसके कारण इस जन्म में बीमारी आई हो, इस जन्म में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ हो. तो अगर उसके लिए मेडिकल हेल्प, इनफैक्ट लिखा हुआ है रॉन्डा बर्न ने स्पेशली, दैट यूज द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस इनटू द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो दैट यू आर यूजिंग टू क्योर इट. ओके, सो जो भी दवा ले रहे हैं या जैसे हमने ऋतु का देखा ना, उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी और किस तरह से वो हर बार जब कीमोथेरेपी, अब मेडिकल डायग्नोसिस तो उनको कराना ही था क्योंकि जो इश्यूज आ रहे थे. तो उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस कराया उन्होंने, फिर उनको पता लगा कि ये इशू है. और उसके बाद उनको डॉक्टर ने बोला कि कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी आपको 8 to 10, है ना. तो उसके बाद उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बीमारी क्यों हो गई है, क्या है, क्योंकि पता नहीं है कि किस, शायद कभी किसी से ग्रज की हो, चाहे पिछले जन्म में कुछ हो, उसकी वजह से कुछ हुआ. So all that has been all said and done. But now what? In the present moment, what? So now you have all the power. There is a gold mine and a treasure within our life to heal and reverse any situation because of infinite possibilities that are there in our life. Every cell of the body listens and every cell of the body is self-healing. Okay? But usko activate करने के लिए हमको we need to be in gratitude and love all the time. So अगर मेडिसिन भी लेनी पड़ रही है, अगर डायग्नोसिस कराया कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर उसकी वजह से लेना भी पड़ रहा है कोई मेडिसिन, उस मेडिसिन में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और उसको बिल्कुल मिरेकल पिल बना दो एंड देन कंज्यूम इट एंड देन द बीमारी विल गो. सो इट्स ऑल राइट टू जस्ट गेट द टेस्ट डन बिकॉज हम सबकी जिंदगी में मैजिक बुक कभी कभी अभी तो बहुत रिसेंटली आई है. फॉर सम ऑफ अस इट्स कम वेरी रिसेंटली, राइट? फॉर And for few of us, it's come say 4 years ago or 3 years ago, like that. So पता नहीं ना, तब से कुछ कोई क्रॉनिक सी बीमारी हो बॉडी में जो नहीं पता है, उस तरह हमारा उस वक्त बहुत गुस्से का बिहेवियर था जिसके कारण हमको मे बी ब्लड प्रेशर हो गया था. तो अभी भी डायग्नोसिस चल रहा है, अभी भी डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, कोई बात नहीं. अगर जैसे डायबिटीज है ना, अब वो 25 साल से किसी को डायबिटीज है तो ऐसे थोड़ी कि अब मैं डायबिटीज का चेकअप नहीं कराऊंगी या मैं फुल बॉडी चेकअप या जो भी शुगर ब्लड का चेकअप या वो नहीं कराऊंगी, HbA1c नहीं कराऊंगी बिकॉज आई एम इन ग्रैटिट्यूड जर्नी. नो, गेट इट डन, सी द लेवल एंड देन हील इट अगेन, चेक द लेवल एंड सी और ज्यादा कम हुआ है. इस तरह कर करके आपकी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द पावर. देर आर, इट्स कॉल्ड मिरेकल्स, द हीलिंग मिरेकल ऑफ द बॉडी that gets activated when you're very, very grateful as a person and when you try to align, by the universal thoughts of love, happiness, joy, calm, peace, and gratitude. That way, it's just all right to get your test done, but not out of fear. Okay, there shouldn't Ma'am be a say, feeling. yeah, sorry, there is one question. Her age is 45 and I want to conceive. What practice and affirmation I do for that? Okay, so this has to go in your dream list. I think we've already made it very clear. So put it in your dream list, ठीक है? और उसमें और फिर विजुअलाइजेशन आपको करना है कि आप बहुत मतलब पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हो, एक छोटा सा बेबी आपके गोद में है, सॉफ्ट सॉफ्ट से उसके पैर हैं, पिंक कलर की या जो भी शीट, वो एक रफल वाली शीट ओढ़ी हुई है, पूरी फैमिली हंस रही है, सब सब बोल रहे हैं मुझे दो मुझे दो मुझे दो. ये इमेजिन करो और बहुत जल्दी आपकी गोद में बच्चा आ जाएगा. ये मेरी ब्लेसिंग है आपके पास, ठीक है? और प्रैक्टिसेस रिलीजियसली करो जितनी भी मैजिक बुक प्रैक्टिसेस हैं. सो फर्स्ट ड्रीम लिस्ट में डालना है आपको दैट थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट आई एम हैविंग अ बेबी, ठीक है? उसके बाद विजुअलाइजेशन करना है एज इफ द बेबी इज ऑलरेडी कम अर्ली मॉर्निंग और रात को सोने के पहले.
and practices सारी करनी है diligently. सारी 28 practices every month, and there is no way that आपकी गोद में बच्चा नहीं आए. हाँ जी. Second question, ma'am. I am into my weight loss journey, looking for life partner and want to establish in career. I am blessed with money, what my father gift me. I want start my earning. On which area we can start doing practice? Right now, I am doing all daily session tasks. For health, I am doing Hoponopono and 555 technique. Is this affirmation okay? So my affirmation is I fit into denim size 36 very easily. Okay. Yeah. Yeah, which is so focus more on your thank you that I am so and so kgs, I mean, yeah, pounds, and am absolutely enjoying the best of health and fitness. Okay, this has to be your affirmation. So many kilos and enjoying the best of health and fitness. ठीक है, ये भी साथ साथ जाएगा. एंड दूसरा क्या था, पार्टनर के लिए ड्रीम लिस्ट में डालो. पार्टनर की पूरी क्वालिटीज बनाओ. आपको पार्टनर में क्या क्या चाहिए. डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो बुक थी उसमें फर्स्ट चैप्टर में था दैट दिस वुमेन जिनके बच्चे बड़े होके बाहर चले गए थे और वो अकेली रहती थी, उनके हस्बैंड की काफी साल पहले डेथ हो गई थी एंड शी वांटेड टू हैव अ पार्टनर. तो उन्होंने लिखना शुरू किया दैट आई एम वेरी लवेबल एंड अंडरस्टैंडिंग and I am happily married to a spiritual minded, good natured, fun human, and like I am secure. ये चीज उन्होंने मतलब अपने ललेबाई की तरह दिन में 3 बार 10 टाइम्स बोलती थी स्लोली, लाइक बिल्कुल स्लीपी ड्राउजी स्टेट में. और 2 हफ्ते के बाद वो कोई ड्रग्स लेने के लिए गई, मतलब मेडिसिन लेने के लिए ड्रग स्टोर पे गई, तो ड्रग स्टोर का ओनर आया हुआ था. दे फेल इन लव इंस्टेंटली. और जब ये बुक डॉक्टर मर्फी लिख रहे थे तो वो लोग हनीमून के लिए यूरोप में थे. ठीक है, तो इस तरह से आपका लैक और रेजिस्टेंस तो नहीं है. आप ये सोचो एंड सारी क्वालिटीज लिस्ट करो आपको पार्टनर में क्या क्या चाहिए. दैट ही शुड बी टॉल एंड हैंडसम, ही शुड बी वेल्दी और कंफर्टेबली वेल्दी, या जो भी आपको लिखना है कि उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, जो भी इनकम है इतनी होनी चाहिए. माई इन लॉज शुड बी वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग, वार्म, पेरेंट्स, या जो भी. ठीक है, अब सारी क्वालिटीज. और वो लड़का बहुत गुड ह्यूमर्ड होना चाहिए. ही शुड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड he should express love to me, he should be courageous, and he should come. इस तरह का उसका जॉब होना चाहिए. वो सारा लिखो and then you also try to become a person like that. Because like attracts like. 1 second. There's lots of magic dust for Dikti ma'am from all 88 participants. Ma'am, this will be very Yeah, helpful. kind of just been struggling with it, but ho jayega. Like I Yes. have also taken some pill for my cold and cough today, but I put in so much gratitude into it that by tomorrow morning I'll be absolutely okay. Ma'am, you can do a 369 technique. Thank you. Thank you, Guruji. दीप्ति मैम, कई बार ना आप जैसे अदरक वगैरह का पानी लेते ना, वो उससे सब कर रही हूँ मैं. Oh, मेरा sweet. प्रोफेशन ही यही है, लोगों की बीमारियों को बिल्कुल उनको फिट फाट चंगा करके उनको डांस कराना. ये मेरा प्रोफेशन है. तो मैं भी वही कर रही हूँ अभी. आई एम डूइंग द बेस्ट. या Yeah. I'll go next, Minama. हाँ. This one is interesting. Is there a way to correct the sins, like anything done consciously which have been considered as betrayal or doka for other person, honest and loyal and pure, but after that the guilty is very much sorry and wants forgiveness and change and has changed the life, but things are not in favor. It feels like everything is not good, and of course negative thoughts are creeping in. What to do, how to get back those things, those memories and that trust from the other person? 2 things. Firstly, magically turning mistakes into blessing wala chapter. You will need to do every day, at least for about 6 days. Okay. And it will definitely get better.
And second thing is Ho'oponopono, because you cannot live with this guilt, है ना? So you just do Ho'oponopono. I'm sorry, please forgive me for whatever I have done, by mistake and unintentionally. And thank you. I love you for a beautiful outcome that comes out of it. That's it. And then do 108 Ho'oponopono. If the guilt is really bothering you, do it 2 times, 108 morning, 108 evening. Otherwise, and magically turning mistakes into blessings. That chapter you need to do at least about 6 days. Yeah, that's more than enough. And it's okay. Firstly, you have to come to terms that every person makes mistakes. Every person must have given धोखा to the other person. But there were phases. कभी कभी ऐसा होता है आप ना नहीं बोल पाते हो इसलिए वो धोखे की तरह लगता है. ठीक है? So I mean, like, don't beat yourself up and feel guilty about anything. Guilt is in the feeling chart. It is way below the line. So it will start tainting everything, every area of your life अगर आप guilt में रहोगे तो. So इसलिए just do these 2 practices, more than enough. हाँ जी. Meena ma'am, you can ask the next question. So tomorrow is my son's competitive exam. He's preparing for it since last many years. I'm doing affirmations also, but what exactly I should do in tomorrow's practice? You've already done everything. So tomorrow is the exam. So be very, very clear that just do a scripting technique now that you have only 1 day left. Okay. But every moment also has lots of opportunities to transform the things around in the environment. So nothing to worry. अच्छे से बैठ के आज चिट्ठी लिखना यूनिवर्स की कि कैसे आप सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हो कि उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है. सब इतने खुश हैं, मिठाई का डब्बा लेके आए हैं, सबसे पहले मंदिर गए हैं. वहां पे मंदिर, मतलब अगर आप हिंदू हो तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. जो भी आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप है, आप वहां पे प्रसाद या जो भी चीज, जो भी ऑफरिंग देते हैं अलग अलग रिलीजन में उस तरह का. जैसे अगर आप क्रिश्चियन हो तो चर्च में जाके कैंडल लाइट करो ग्रैटिट्यूड की, या जो भी जैसे भी करना है. अगर आप हिंदू हो तो आप प्लीज अपने आप को, मतलब ये पहले से स्क्रिप्टिंग में लिख लो दैट वी वर so happy, we were all dancing with joy, and we went to the temple and we offered prasad, and like invited everyone for a party, and like the whole family is so happy. And now you're happily, ab jahan pe bhi usko placement aati hai, that you're happily packing for your child's, wherever he has to go for his further studies or whatever it is. And just do your proper scripting and read it again and again, pour gratitude into it, read it again in the morning as well. And that's it. Everything will turn out well and your child will get into that exam. अगर उनका future उसमें है तो. Because universe can see our destination. Human mind can see only 20 meters from here, like a car's headlights, so you can see only 20 meters in front of you, human mind, but the universe can see your destination. So universe will take you on that path, which is supposed to be glorious, good, benefiting, and magnificent. So yeah, please give it your best shot and just go with a strong this thing. And all the while he's there, you can write blessings. Please write 108 blessings for your child while he's giving the exams. Okay, ma'am. Yeah. Next question. I see a pattern in my career wherein when I start any new job, it's all going great. But as the time progresses, I start facing breakdown. So I need affirmation practice, which I can do to see breakthrough in my career. Okay, so there's something within you, whosoever it is, there is something within you that needs to change. If you're constantly losing your jobs again and again and constantly shifting, that means there is some tendency of yours which needs to change, which you will have to ask yourself. So what you do, the best thing is that before you go to sleep in the night, just ask yourself that universe, to the infinite intelligence of the universe, please reveal to me what is it that I need to change. And believe me, that thing will come appear before your eyes very easily. You can write it and you can ask, and before sleeping, you can again ask the same question, hand it over to the subconscious mind to answer. There's something in your life tendency. It could be anger, it could be complacency, it could be procrastination, it could be gossiping, it could be ability to not get along with each other, with your co-workers. It could be unpunctuality.
which is bothering others, or it could be, throwing the work and taking an easy way out, like रास्ता अपना मतलब heavy work किसी और को push करना और मतलब सस्ते में निपट जाना टाइप्स, हो सकता है आपकी वो आदत हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण which is triggering that response of you losing the job again and again. So please break that pattern, identify that pattern, और अपने वर्क प्लेस के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करो। जो वर्क्स लाइक मैजिक प्रैक्टिस है इनविजिबल मैनेजर वाली, which is 3 4 5 6 ओके, चैप्टर नंबर 6 जो है मैजिक बुक में, उसको बार बार रोज करो। You have to have a lot of gratitude for your work. You don't have it to that level right now. This is the reason, because जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, वो चीज एम्पलीफाई होती है लाइफ में। आपको वहां प्रमोशंस मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको सैलरी हाइक मिलने चाहिए, है ना। जॉब थोड़ी लूज होनी चाहिए। जॉब लूज हो रही है इसका मतलब अभी भी कंप्लेन के रेमनेंट्स है ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, है ना। कुछ ग्रजेस है या वही आदत है कि बहुत छोटा करके मतलब काम को बहुत सीरियसली नहीं लेना, एंड काइंड ऑफ कहीं पे कुछ है, कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन या गॉसिपिंग या कुछ ना कुछ ऐसा which is not going and which is causing you problem in every job that you're taking. So just identify that and do works like magic. And this practice of asking the universe, it is so like I told you that I'm authoring my first book, मतलब कोर्स की किताबों के अलावा जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है वो अभी लिख रही हूँ फॉर द ओपन मार्केट, like not कोर्स की किताब, like a first like non-fiction book. So I was actually thinking what I should write on. And then I thought that, come on, Deepti, you don't need to think so much about it. I mean, when you have a subconscious mind and infinite intelligence inside you. So then I read Dr. Joseph Murphy's one chapter where he had written, where this person wanted to write a novel. And he said that, which is that one novel I can write, jiska content bahut power packed hai, which is very saleable and marketable, like. So he asked this, and then he got a series of ideas, that this chapter, then you write on this content, and this is how, that book came around and it became the New York's bestseller. So पहले से ही पूछ लो कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट, मतलब आप पहले पूछ सकते हैं ऐसा कौन से सब्जेक्ट पे मैं लिखूं, that will be a roaring success and that every person would love to read and transform their life. So this is what I asked the universe. Universe, please reveal to me that what should be that topic that will touch, so many people's life, and it'll be the bestseller only with the intention that it is transforming so many lives. Because if it goes to billion people, it will turn the life around for billion people, right? I mean, रीजन इज नॉट कि वो बहुत मार्केटेबल होनी चाहिए और रेवेन्यू जनरेटिंग, रीजन है कि लोगों की जिंदगी को टच करने वाली किताब। तो वो ऑब्वियसली अगर बिलियन लोगों को टच करेगी तो फिर इनकम तो उससे जनरेट हो ही जाएगी ना, इनकम तो बाय प्रोडक्ट है। तो इस तरह सबकॉन्शियस है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, आपको आप मिलेगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। हाँ जी। Okay, ma'am. Next one. Okay. We are three members. It's regarding a court case. They are involved. This court case is solved, but it was regarding a salary matter. The court case was solved. It was in their favor, but they're still not got their salaries. Should they be doing about it? Well, just give a lot of blessings to the workplace. एनर्जी नेगेटिव दे रखी है तो उसमें से पॉजिटिविटी कैसे जनरेट होगी? जिस जगह पे अंधेरा है वहां से रोशनी कैसे आ सकती है? रोशनी तो हम ही को बनना पड़ेगा ना, खुद ही रोशनी बन के जाओ उस जगह पे, ठीक है। Like by blessing, so much blessings, to every person involved, even to the other party. See, the other party has come as your personal emotional trainer. मतलब कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में था, उसको बदलने के लिए वो दूसरी पार्टी जिसने कोर्ट केस किया या मतलब जो भी हुआ है, टू कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज होती है ना, ऑपोजिट पार्टीज। सो अगर वो आपको एक तरह से कहते हैं ना यूनिवर्स, आप जो हमको, जैसे सपोज मेरे एनवायरमेंट में कोई, सपोज एक सास है और एक बहू है, ठीक है। एक बहू है, वो उसको बिल्कुल अपनी सास पसंद नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं, जबकि सास बहुत अच्छी है एक्चुअली, बट बहू को उनकी क्वालिटीज पसंद नहीं है। बट सास को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बट बहू को ये है कि वो ये भी करती है, बहुत इंटरवीनिंग है, बहुत इंट्रूसिव है, मुझसे हर चीज में क्वेश्चन करती हैं, मुझे ये अलाउ नहीं करती, मेरी वो अलाउ नहीं करती हैं। तो इस तरह से तो वो सास बहू की जिंदगी में एक स्क्रबर बन के आई है, क्लेंजिंग एजेंट, ओके, अ शैम्पू,
वो बन के आई हैं उनकी सफाई करने के लिए जिंदगी में, ताकि बहू की जिंदगी आगे जाके बहुत अच्छी हो जाए, बिकॉज उस बहू में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज हैं जो वो सास क्लीन कर रही हैं बाय गिविंग कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं उनको रोंडा बर्न ने बोला है दे आर कॉल्ड पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, पीईटीज। उनको एज अ पीईटी लो कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आए, आपको पॉलिश करने के लिए आए, सो दैट यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स एंड यू कैन लिव अ वंडरफुल लाइफ। इसीलिए बहुत सारा ऑपोजिशन पार्टी के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना और एमिकेबल तरीके से रिजॉल्व हो जाए कॉन्फ्लिक्ट्स। अगेन चैप्टर नंबर 7 करो और एंड में उसमें लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। 10 पॉइंट्स लिखने हैं इस पूरे केस में से, इस केस के बारे में, और एंड में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन एंड देन सरेंडर। ठीक है, बस ये करना है। तो और बहुत सारा आप स्क्रिप्टिंग करो, आप 555 टेक्निक कर सकते हो, जो भी आपको करना है। एवरीथिंग विद द आउटकम विल बी वंडरफुल इफ यू आर इन अ ग्रेटफुल जोन। अगर आपकी लाइफ से नेगेटिव चीजें रेडिएट हुई उस कोर्ट केस को लेके, या गुस्सा आया या इरिटेशन हुई, अब वो और खींचेगा। दिस इज हाउ इट इज। हाँ जी। ओके मैम। मैम देयर वाज आपने सास बहू का बोला था ना, तो देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम कि ऑफ कोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सास बहू, सो योर आंसर होल्ड्स ट्रू फॉर दैट क्वेश्चन आल्सो, राइट? कि आप फिर से इज एड्रेस राइट। करना हाँ, चाहते हैं। मैजिकल रिलेशनशिप्स करना है उनको। सास की फोटो रखनी है सामने, 5 गुड पॉइंट्स इन द लैंग्वेज। जैसे सपोज आप उनको मम्मा बोलते हो, थैंक यू मम्मा फॉर हैविंग सच अ गुड कलेक्शन ऑफ sarees and I also borrow your sarees sometimes. Thank you mama for making rajma and rice so tasty. Thank you mama that your friends really love you and you keep going out and meeting your friends. Thank you mama that you gifted me the sari when I really needed it, or whenever, like gifted me the sari on my birthday. Thank you mama for letting me go to my mother's house once in a year. So these 5 points you've written, suppose, and then you have to look at सास की photo again 2 more times other than the morning time. Morning में सास की photo सामने रखी, ये पूरा लिखा थैंक यू मम्मा, ठीक है। फिर 2 बार और दिन को थैंक यू मम्मा से फोटो निकाल के, फिर वो कुछ लिखना नहीं है, बाकी के 2 बार फोटो निकाल के थैंक यू मम्मा बोलना है, फिर रात को थैंक यू मम्मा बोलना है। एंड यू सी इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस प्रैक्टिस विच इज चैप्टर नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, आपकी बिल्कुल केमिस्ट्री अपनी मम्मी के साथ बदल जाएगी। एंड you'll become so friendly too. I mean, like, both of you will become so friendly. And also use visualization where you are thinking and whatever, like that आप खूब शॉपिंग कर रहे हो, मजे कर रहे हो, घर में होस्ट कर रहे हो and you are being very nice to each other, हंसी मजाक कर रहे हो, ये सारी चीजें इनको विजुलाइज भी करो साथ साथ। बट मैजिकल रिलेशनशिप वाली बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है, हमें उसकी पावर अभी पता नहीं है क्योंकि हमने तरीके से की नहीं है। It was Sas asking for a bahu, so it's अच्छा, or whichever way, yeah. yeah. Even if it is brother and sister, even if it is husband and wife, even it's a boyfriend and a girlfriend, this is how it is to be done. Yeah, ma'am. We have received multiple questions on the husband-wife relationship, which is absolutely not harmonious. They don't know what to Same do. practice for magical relationships. And just be patient. धैर्य रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देर आर सो मेनी पीपल, मैंने जो अपनी फ्रेंड के बारे में भी बताया था कि उन्होंने किस तरह से वो अल्कोहलिज्म को टर्न अराउंड किया था, उनको ऑलमोस्ट 8 महीने लगे, मतलब इतनी ज्यादा फैमिली डिसहार्मनी थी दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इन द फैमिली वुड जस्ट ड्रिंक एंड क्रिएट अ मेस विथ एवरीवन। ओके, तो इतना ज्यादा मारपीट का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था, ठीक है। उस लेवल पे बात पहुंच गई थी वेयर देयर वाज अ हिटिंग अराउंड ऑल दैट गोइंग ऑन। एंड टुडे इफ यू सी दैट पर्सन यू विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज कि ये कभी अल्कोहल को हाथ भी लगाता होगा। मतलब उस लेवल की फैमिली हार्मनी, और इतना ओवर केयरिंग, मतलब केयरिंग इज ऑल्सो नॉट द वर्ड, ओवर केयरिंग वो हो गया है फैमिली की तरफ, so this is how situation transforms with magical relationship practice. So don't negate the effect, just be calm and patient and do what you need to do. Okay, अपने आप ये जो
कहते हैं ना जो फॉर्मलेसनेस, ये वाली जो एनर्जी होती है, दिस मैनिफेस्ट इन द फॉर्म। आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन में डिफरेंस देखोगे, बट तरीके से करना है। मतलब वो 3 बार थैंक यू फोटो को देख के भी बोलना होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह लिख लिया, छुट्टी हो गई, बस डस्ट ऑफ योर हैंड्स एंड गेट गोइंग। फोन में ही तो होती है ना फोटो, फोन को खोलो, उसमें बोलो थैंक यू सो एंड सो, जो भी पर्सन का नाम है, राहुल सपोज है तो थैंक यू राहुल, दिल में प्यार से। फिर दोबारा रात को उसको फोटो निकालो, थैंक यू राहुल। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। इट्स नॉट जस्ट राइटिंग 5 पॉइंट्स, इट इज 3 टाइम्स सेइंग, फोटो को सामने रख के थैंक यू भी बोलना है अलग अलग टाइम पे। हाँ जी। Meena ma'am, do you want to give So say the next question? yeah, sure. I have joined this group in December. Before filling our own cup, can we ask third person to do any particular practice for their own challenges, or do they need to do first all 30 days practices and then on a specific area? दे हैव टू डू ऑल 30 प्रैक्टिसेस। पहले देखो, जब भी कोई किसान भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो पहले उसको वीड्स निकालते हैं, फिर उसको जमीन को इवन आउट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसके बाद उसमें क्रॉप्स डाले जाते हैं। ठीक है, जब तक लैंड ही फर्टाइल नहीं है तो उसमें कुछ भी डालोगे ना तो वो फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसके लिए एटलीस्ट 3 months चुपचाप मुंह पे टेप लगा के सारी वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस 1 to 28 3 महीने कर लो। उसके बाद you will not even need to ask, because things will start falling into place. It's just that people listen, they love listening to me, but they don't do the practices. And there are so many people I know that they don't do the practices, not even for the first, second and third month. क्योंकि देयर कम्स अ टाइम जब ये प्रैक्टिसेस आपके आपके सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट हो जाती हैं, फिर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज एक दिन में वैसे भी आप 9 प्रैक्टिसेस कर रहे हो, रोज मैजिक मॉर्निंग कर रहे हो, बेड में बैठे बैठे फॉर एवरीथिंग, कि मैट्रेस के लिए थैंक यू, फैन के लिए थैंक यू, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू, इस रूम के लिए थैंक यू, डोर्स एंड विंडोज के लिए थैंक यू। तो ये सब हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं, फिर काउंट माई ब्लेसिंग सब करते हैं, मैजिक रॉक सब करते हैं, खाने पीने के पहले मैजिक इंग्रेडिएंट्स करते हैं। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, जब पूरे दिन आपका ग्रेटिट्यूड, योर सबकॉन्शियस माइंड हैज गॉट अ पैटर्न ऑफ ग्रेटिट्यूड नाउ ऑलरेडी। सो इफ यू नॉट इवन डूइंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस आफ्टर 4, 5, 6 years, इट इज ऑल राइट, बिकॉज आप बहुत ज्यादा इमर्स्ड हो ग्रेटिट्यूड में ऑलरेडी। बट अगर फर्स्ट 3 months भी नहीं किया है, देन सॉरी टू से बॉस, लाइफ इज नॉट चेंजिंग। हाँ जी। How to be less critical of ourselves and how to practice self love even mechanically? आप बताओ मीना, सेल्फ लव के लिए क्या हम सिखाते हैं? The best practice is magic mirror, Yeah. where we have to be grateful for ourselves. Sit learn. in front of the mirror and do the LRAG practice. I love you, Deepti, for who you are, and I also love you, Deepti, for who you are not. I'm very grateful to you, Deepti, for whatever you have done for me, and I'm also grateful to you, Deepti, for whatever you have not done for me. Okay, then I accept you, Deepti, just the way you are, and I also accept you, Deepti, the way you are not. Okay, so this is L is love, R is respect, A is accept, G is grateful. Okay, ऐसा अपने आप को बोलना है उस इंसान के लिए जो शीशे में है। आप रोज ये करो। There is no chance that आपको अपने आप से you fall madly in love with yourself. You will. Yeah. Others also will, ma'am. Yeah, वो तो the moment self love comes inside, others start loving you so much. Yeah. So it is said that give your 100% in your job, but in today's time, the people who does work well, they are given more responsibility while others don't do any work. So how to give your 100% without exploitation? From the standpoint of grudge, complain, and blame, nothing is going to change. Okay? This is such a big grudge complaint that nothing is going to change. The universe is never going to protect, अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, बाकी सब ऐसे ही मस्ती करते हैं। Be that person who is indispensable at your workplace. You have to be that kind of a person. Okay, and the universe will keep supporting you. I will give you the example of Saturday. This Saturday, which is yesterday, it was a working day. Last Saturday हमारा working day होता है। मुझे
So I'm into education, and my organization is that we have a tie-up with 2 universities, Gen X University Bangalore, VLCC where I work and I head that, and other university is Mangalatan University, Aligarh. So we work in coordination with each other. And since we have a tie-up with Gen X University, I had to send them 8 subject ke question papers, final exam question paper in the format that they had sent. And question paper I have to, like, me or my team will only make, and I did not have anybody. I have 2 people looking after my work in my absence. Both of them were not there. Okay. So that was there. Then I had to edit one entire book, and I had a deliverable till evening that I had to give it by 6 o'clock. और मैं बहुत late office से नहीं निकलती हूँ. I enter at 9:30 and I'm out by 6 o'clock because my time is 9:30 to 6. So that, and फिर मैंने सुबह Have a Magical Day किया. ठीक है. अब this was a lot of work to do, and बाकी सबकी टीम्स बहुत लंबी हैं. मेरी टीम में बहुत छोटे से लोग हैं और वो भी दोनों गायब. So मतलब genuine reason से गायब हैं. मैंने सुबह बहुत अच्छे से लिखा that thank you universe that the book was edited before 6 o'clock and I could actually send it for the first cut. Like जब भी हम किताब लिखते हैं तो उसका पहले फर्स्ट मतलब सॉफ्ट कॉपी आती है, उसमें एडिटिंग होती है, फिर उसका फर्स्ट कट हार्ड कॉपी में आता है, फिर सेकंड कट आता है, फिर थर्ड कट आता है, इस तरह से फिर फाइनल वो प्रिंटिंग में जाती है. तो अभी सॉफ्ट कॉपी की स्टेज पे ही था. So I had written this that it was very easily done before 6 o'clock. सेकेंड थिंग इज जो क्वेश्चन पेपर्स बनाने थे, मैंने उसके लिए डेडलाइन लिखी थी 12 noon. इसीलिए yesterday when I ended the session in the morning and when so many of you wanted to share, तो मैंने बोला था ना that today I have to go to office on time and I have a lot of work, so I didn't want to get late. तो मैंने सेशन एंड कर दिया था सुबह, आई थिंक बाय 7:15 और समथिंग लाइक दैट. सो मैं ये लिख के गई थी, मतलब हैव अ मैजिकल डे में, दैट आई कुड कंप्लीट ऑल माय वर्क बाय 12 noon. ये क्वेश्चनर का of all the subjects question papers, and which was very technical work to do. Okay, you will not believe that I was the one who was given that kind of a burden work. Okay, others had the team members, in fact जो heads को पता भी नहीं था, उनके बाकी के टीम वाले कर रहे थे, मतलब क्योंकि वो सब थे तो उनमें से किसी को नहीं था. मैं ही सोच सकती थी ना कि सारी मुसीबत मेरे ही सर क्यों आई है, मुझसे नहीं हो रहा, कैसे होगा. मैं तो पहले से ही सुबह हैव अ मैजिकल डे करके गई थी. एंड यू विल नॉट बिलीव, जो मैंने सारा क्वेश्चनर है टाइम देखा, 11:58 AM it was when I mailed it already. जब मैंने Gen X University को मेल कर दिए थे अपलोड करने के लिए, 11:58 sharp. It was done with so much ease. Okay, so it is such a privilege for some people to be so skilled and capable. Instead of feeling proud and feeling good that wow, I can do so much more from the place I'm withdrawing so much of salary, उसकी जगह अगर हम ये बोलेंगे कि सारा मेरे ही सिर पे काम आता है, बाकी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, हर एक मोमेंट का रिवॉर्ड जैसे ही आपने कॉज किया है ना, उसका इफेक्ट आपको मिल गया है ऑलरेडी, है ना. जैसे कलर पर्पल में ओपरा विंफ्रे हीरोइन थी, मतलब प्रोटैगनिस्ट मेन थी, तो उन्होंने यही कहा था ना दैट वट एवर इज डन अनटू यू, वट एवर यू डन अनटू मी इज ऑलरेडी डन अनटू यू. तो जैसे ही आपने ऑफिस के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ एक्स्ट्रा काम अकम्प्लिश कर लिया, आप देखना इनविजिबल रेल्म से उसका रिवॉर्ड बहुत बड़े फॉर्म में आपके पास आएगा, और इट विल कम एट अ टाइम व्हेन यू नीडेड इट द मोस्ट and when nothing was working out. And at that point of time, you're going to get the feel very, very privileged and grateful that you are that person who's dependable. We pray to become dependable at work. It is like that. And you already are. So isn't it such a wonderful thing? और जो काम को easy करना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अभी तक हो जाना चाहिए था. That any work if it is like yesterday, मैंने जो दोनों काम किए, वो उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे. Constantly my phone was ringing, like non-stop. तो मुझे तो इरिटेशन नहीं हो रही थी कि क्या फोन बजे जा रहा है जब मैं बैठ के ये वाला काम कर रही हूँ, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट एंड हैव अ ग्रेटफुल हार्ट, है ना. एक कोट है, अ ग्रेटफुल हार्ट इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. सो वी हैव टू रिमेम्बर दैट. हाँ जी. So Kalpana, your hand is raised, but we are not really taking any questions verbally. If you want to ask anything, you can put it in the chat box, or you can send it to Meena or Soumya. Ma'am, okay. Yeah. Next question, can I ask? Yeah. So the question is,
I'm I'm eagerly I eagerly want to meet you, ma'am, Deepti ma'am. However, there is a which have a similar kind of fear at my workplace of being judged. Based on my innocence, this fear I get for people who are polymath. How to overcome it? Increase your skills and your knowledge. Okay, that's what gives you confidence. And you have to become that kind of a person that you don't have to care about what ये कल मैंने address किया था ना. You have to come to that point in your life where you stop caring about what other people feel about you all the time. Okay, so please do your mirror work practice. This comes out from, this stems from lack of self-confidence. So please sit in front of the mirror and do your LRAC practice religiously. Do it for 21 days and you see the miracles of it. Okay, so don't worry. I mean, like, please, you are the best and you are a treasure in yourself and you are born on this earth to do great things. Okay, and you are going to achieve that. So you're already in this journey, you don't have to fear anything. Don't have that FOMO and all that, so, and or fear of being judged. So your mirror work will help you do that. Yeah. Ma'am, Okay, ma'am. last question from my side. Right. So Okay. yeah, Okay, we sorry, read that. Meena, that person was also saying wants to what, meet me. Yes, ma'am. She wants to Acha, meet you, but she but has that fear fear of that I'm being going to judge judged. her. That I Not will judge her. you, ma'am. That she herself has that fear, innate fear that क्या होगा, कैसे होगा, like that. अरे मुझसे मिलने में क्या है? कहाँ रहते हो आप? Where does she live? I am a I girl with the wings and I'm always here and there. Manifest it. It's not very difficult. If you're in Delhi, just come to my office, but you'll have to give me a call and come so that I'm at different places every day, different offices. I've got 12 offices in Delhi. Base is near GK. But if you want to just come and meet me, lunch break, I'm free. I can treat you some nice coffee date. think she got the message, ma'am. She will connect with you. Yeah. Yes, Meena, ma'am, you can ask the question. So we read that have gratitude for the person who created problems, but we can't have gratitude for that. So how to go? You can't have gratitude. Please do heal my relationships if it is not a very close relative. If it is a close relative, you have to do magical relationships 5 times and thank you उनके नाम के सामने फोटो देख के. And if it is टूटा हुआ रिश्ता या क्रैक आ गया है रिलेशनशिप में, then it has to be heal my relationships where you have to. रोंडा बर्न के हस्बैंड के साथ कितने स्ट्रेन रिलेशंस थे हमको पता नहीं है ना, क्योंकि हमने उनकी स्टोरी नहीं पढ़ी है कभी भी. उनके बहुत ज्यादा स्ट्रेन रिलेशनशिप. यू कैन थिंक ऑफ द वर्स्ट थिंग्स काइंड ऑफ दैट दे शेयर्ड. ओके, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हील माय रिलेशनशिप में आप देखना उन्होंने पॉल के लिए कितनी सुंदर बातें बोली हैं. फॉर पीपल हु रेड दैट बुक, दे नो दैट she really went overboard in praising him and taking out the nuggets of gold from a very toxic relationship, okay, so to speak. एंड टेकिंग आउट नगेट्स ऑफ गोल्ड. छोटी छोटी चीजें इन्होंने किस तरह से निकाल के रखी थी, निकाली और उसकी लिस्ट बनाई. तो आपको वो करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है ना. कम टू दैट लेवल ऑफ कम. अगर छत भी मिली हुई है उनकी वजह से या कभी मिली थी किसी टाइम, ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू. कभी होम स्पेस शेयर किया हो, कभी एक टेबल पे बैठ के खाना खाया हो, ठीक है, वैसी चीज हो सकती है. पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू ऑल योर 10 पॉइंट्स ओनली. So you can't say that I can't do gratitude, then well, go back home, get into the mattress and put the covers over your head and go to sleep. Hanji. Okay, ma'am. If someone in family always remains in low frequency, remains in the past, want to show that only you them accountable, how can one give blessings to them, always to think positive about them and be in high energy?
Yeah, I mean, you just have to do your magical relationship. It's a family member, so it's okay. I mean, there's something that needs to be polished inside you. It's not never about the other person. Believe me, it's never about the other person. और अगर आप gratitude की journey में आए हो, तो please be ready to do whatever I'm telling you to do. Otherwise, you don't have to. Nobody is forcing anyone to do it. If you really want to improve your life, then you have to do it. There is no option. We don't give an option of not doing the practice और स्टिल थिंकिंग. हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे मेरे दिल से उनके लिए अच्छी चीजें नहीं निकल पाती है, तो आपको फिर जबरदस्ती पांच पांच चीजें ही सिर्फ निकालनी होंगी, बट वो निकालनी पड़ेंगी. देयर आर पीपल हु डन इट इन द वर्स्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस. आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स इन द वर्स्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस आल्सो दे हैव मैनेज टू टेक आउट 5 blessings, फॉर पीपल जिनकी वजह से जिंदगी भी खराब हुई है, उनकी वजह से बहुत पेन उनके लाइफ में रहा है, उनके लिए भी वो 5 blessings निकाल पाते हैं ना. So this ground is for people who want to grow and thrive and flourish in their life. It is not that I can't do it. I mean, there was one of my colleague who once told, like she's constantly complaining about her mother-in-law and constantly in my ears. And imagine, my mother-in-law is my best friend. My mother-in-law is my very good friend. नॉन स्टॉप मेरी सास का ये, मेरी सास का वो. देन आई जस्ट टोल्ड हर दैट आई डोंट वांट टू लिसन, बट वेरी पोलाइटली आई सेड दैट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है किसी बड़े के बारे में आप इस तरह से मुझसे बातें करते रहते हो. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ टूल कि आपकी रिलेशनशिप हील हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए. तो आप अपनी मम्मी के बारे में रोज 5 पॉइंट लिखो. कहती है कुछ नहीं है, उन्होंने आज तक, मैंने कहा कभी कोई साड़ी दी है जब शादी हुई थी? नहीं, तब भी नहीं दी है. ज्वेलरी भी मेरी लेके रख ली, ये कर लिया. मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कभी उनके घर में रहे हो? हाँ रही थी, लेकिन बहुत ही टॉक्सिसिटी के साथ रही थी. मैंने कहा तो उसके लिए लिखो दैट थैंक यू मम्मी दैट यू अलाउड मी टू स्टे इन योर हाउस. फिर उसके बाद मैंने कहा कि फिर हस्बैंड हस्बैंड तो मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन है ना मम्मी हस्बैंड को भी परेशान करके रखती है पूरे टाइम. तो मैंने कहा हस्बैंड उन्हीं की वजह से है ना. थैंक यू मम्मी फॉर गिविंग अ हस्बैंड लाइक सो एंड सो इन माई लाइफ. ठीक है. फिर उसके बाद उनके 2 बच्चे भी, एक बेटा एक बेटी है. तो मैंने कहा बच्चे भी सास की वजह से ही है ना, हस्बैंड और सास की वजह से. उन्हीं का ब्लड है ना इन बच्चों में जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो. तो मैंने कहा ये वाला लिखो दैट. फिर मैंने कहा आपने कभी उनकी किचन में खाना बनाया? अरे पूरे टाइम मैं ही बनाती हूँ, वो तो उठती भी नहीं है जबकि ऐसी थी. मैंने कहा उनकी किचन में आपने उनके मसाले उनकी दालें यूज करके खाना बनाया है ना? हाँ. मैंने कहा फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो. इस तरह कर करके 5 उनको गिनवाए. ठीक है. और अभी सिचुएशन काफी ट्रांसफॉर्म हो गई. 100% नहीं हो गई है, लेकिन हाँ 70 to 80% अभी डिफरेंस आ गया है फ्रॉम दैट, जबकि वो मैजिक बुक जर्नी में नहीं है. ठीक है. बट सिर्फ वो वाली प्रैक्टिस कर करके दिस डिफरेंसेस कम. सो ये तो करना पड़ेगा ना. कहते हैं ना दोज हु स्वेट मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड द लीस्ट इन द बैटल. हाँ जी. मैम इसी की कंटिन्यूशन में कैन आई आस्क समथिंग? या जैसे आई हैव हर्ड यू, अपना क्वेश्चन आप उनको दीजिए, सौम्या या मीना को. ये इसी का एक्सटेंशन है कि जैसे आप हाँ. बोलते हो ना, जैसे आप कॉन्स्टेंटली अवॉइड करते हो एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट और गॉसिप दैट कुड रूइन योर हेड स्पेस. तो अगर जैसे मेरे घर में स्पेसिफिकली रोज न्यूज चलती है 3-4 घंटे, एंड न्यूज हैज बिकम अ वेरी प्रोपेगेंडा थिंग that targets particular टीआरपी. communities, and they talk a lot of about Hindu Muslim and all that politics. तो वो चलता ही चलता रहता है, and वो जैसे एयर में होता है वो चीज. तो हम जिस चीज को एस्केप नहीं कर सकते, तो वो हाउ टू टैकल विद दैट? So you have attracted that environment, Dishant, in your life. You've attracted that because of a lot of noise that was inside your head. So you're seeing it as an outside. So the clearing needs to be done inside. Please do Ho'oponopono for any kind of a content consumption that's coming your way. Okay, to keep you safe and protected. So do that. Just do that 108 times. It'll work. And pray for the person who's actually consuming it too much. So you can imagine there's so much of a clutter in that person's head also, no? Because every day, all that going on all the time, and then just absorbing all that kind of a news. So for the protection of the family, if it is a family. So yeah, please do that. Sure, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you, Disha. Ma'am, this you have addressed previously, but just that I need. So, hello, ma'am.
Hello. I can hear. I can listen to you, Soumya. Okay, ma'am. So, someone's friend, Bhabhi, is in the ICU and she's already writing blessings 21 times. She's asking what more can she do? 108 times. Bhabhi is in the ICU. Please write 108 times. This is the minimum, and write things that you want to manifest. That thank you. Suppose unka Bhabhi ka jo bhi naam hai. Suppose Ankita naam hai. That thank you, universe, that Ankita is just getting better and better. Thank you that Ankita's liver is functioning so well. I'm so grateful that Ankita is happy and healthy. I'm so grateful that Ankita's medicines are really working like miracle in her body. And thank you that Ankita is breathing normally. Thank you that Ankita's blood parameters are coming to normal. Thank you that Ankita's brain is working so well. Thank you that Ankita's immunity is just building up every day. Thank you that Ankita is enjoying with the whole family. Thank you that Ankita, is really, is taking care of the kids so well. Thank you that Ankita is such an amazing cook and she keeps throwing parties and feeding all of us. Thank you that Ankita looks so good. Thank you that Ankita's skin is so beautiful. So this is what you have to keep writing. Write 108. And there could be repetitions in this, which is all right. अभी तो 21 से नहीं चलेगा काम. Okay, ma'am. हाँ जी. Ma'am, it's 7. हाँ, so we'll Should have to, because हमारा बच्चों का session शुरू होने वाला होगा. So we Yeah. can just, so some other time again, we try and do question and answer rounds twice in a month. So we'll do twice in the month of February also. Okay, Okay, so ma'am. mostly they are on Saturday, Sundays, or on national holidays. So like that. Okay, so we'll just bye for today, and thank you so much, everybody who posted their questions. And I hope you got clarity. But again, I want to make that point clear that please be consistent. Consistency is the key to success. If you're not consistent, practices करने में और session भी सुनने में, तो momentum lost हो जाता है. Rhonda Byrne has said this in day 0. दैट अगर आपसे कोई चैप्टर छूट जाता है तो आप 3 चैप्टर्स पीछे जाओ वापस, एंड देन नाउ डू दैट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द मोमेंटम. है ना, जैसे वो डोमिनोज इफेक्ट देखा होगा ना, वो पट 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 करके सारे गिरते जाते हैं जितने भी डोमिनोज होते हैं. अगर बीच में 3 डोमिनोज मिसिंग होते हैं तो वो सीक्वेंस टूट जाता है. then you will not enjoy this world of gratitude and magics and miracles coming to your life. So just do that, be consistent. There is an option of putting your YouTube on fast forward and listening to it. अगर बहुत सारे लोगों ने ये बोला है that उन लोगों का ads बहुत ज्यादा आते हैं, every 5 minutes there is an ad. So आप please YouTube Premium खरीद लीजिए. I mean वो ad free होता है. It does not even cost too much. It is hardly for 100 and something per person. So उससे आपके सारे YouTube channels ad free हो जाएंगे. आप वो कर सकते हो. और नहीं तो आप फास्ट फॉरवर्ड 1.5 पे लगा के, मतलब ऑप्शन होता है यूट्यूब में जो ऊपर जाके 3 डॉट्स ऊपर होते हैं, उसको आप प्रेस करो, उसमें प्लेबैक स्पीड आती है. प्लेबैक स्पीड अभी नॉर्मल पे दिखाएगा, उसको आप 1.5x पे कर दो और फिर आप सुन लिया करो. बट बी कंसिस्टेंट लिसनिंग एंड यू विल फील दैट सर्ज ऑफ जॉय एंड मोटिवेशन हैपनिंग इन योर लाइफ व्हेन यू डू दैट. ठीक है. सो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं है तब तक कितने भी आप क्वेश्चंस पूछ लो और मैं जो प्रैक्टिस करूंगी वो भी उस एक्सटेंट तक दे विल नॉट वर्क द वे दे शुड हैव. सो दैट इज हाउ इट इज. ठीक है. आई ऑल्सो व्हेन आई Can I मिस, take a सपोज minute व्हेन of आई yours? मिस, I will be missing a one session when I have to travel, like in a few days. But that doesn't mean उस दिन मैं सुनूंगी नहीं. तो मेरे बजाय प्रिया will be taking the session, है ना. तो मैं प्रिया का पूरा सेशन सुनती हूँ. It's not that I know too much, I don't know or whatever. I know all the practices, मुझे chapters याद है, मुझे तो अभी लाइनें भी याद रहने लगी हैं. But I never miss, even if I'm not taking the session, मैं प्रिया का session YouTube पे जरूर सुनती हूँ. I never miss out on that. I never want to have that kind of a life when I get so busy that I'm not able to even listen to the magic book session, जिसकी वजह से जिंदगी चल रही है. ठीक है. अगर आप उसी को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो फिर बहुत मुश्किल है जिंदगी में आगे बढ़ना. सिर्फ एफर्मेशन इनफर्टाइल ग्राउंड पे वर्क नहीं करते हैं. So this you can actually see and do. So we have to be in that world, in that realm of gratitude and love and joy. There are people who share their own experiences. We get to learn so much from them, isn't it? So that is how we move forward.
So chalo then, we'll just get going because बच्चों का session शुरू होने वाला है 7:15 वाला. They would be logging on the same link. Okay, thank you Yes, so ma'am. much, and thank you Soumya and Meena and Thank you. Priya and Poonam. So Poonam could be Yes. there. Priya could not. She tried her best, but suddenly इतने सारे लोग उनके घर पे guest आ गए. ठीक है? तो but then all the groundwork that you all have done. Thank you, Meena, for coming at the last moment. Help. You're welcome. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you so Thank you much, so ma'am. much, Thank ma'am. you so much. Ma'am, Thank I you. just wanted Thank to you, say to Dipti. everyone, Thank you, ma'am. बोलो सौम्या. guys, I just wanted to tell everyone who has sent the questions to me, Priyadi, or anybody else, they are all noted and they are all queued up. And whatever is not asked will be definitely answered. So just wanted to say that. All right. Thank We'll say you. thank you, Soumya. Thank Thank you, Thank everybody. you, Thank Soumya. Thank you, Soumya. Dipti. Thank you, Thank Meena. you. Thank you so much, ma'am. Bye-bye. Thank you, Meena, Dipti thank you. ma'am. Thank you. Thank you. Have a great Thank you. evening. Bye.